यस सो लास्ट लेक्चर में हमने मोशन इन प्लेन के अंदर काइनेमेटिक इक्वेशंस जो होते हैं वो ग्रेविटी के अंदर जो मोशन होता है उसके अंदर कैसे अप्लाई करने का वो सब हमने देखा था, राइट। सो आज भी हम उसके ऊपर ही बेस्ट कुछ न्यूमेरिकल्स या कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे जिससे हमको और अच्छी तरह से वो कंसेप्ट समझना आसान होगा। तो लेट अस सी how to apply the kinematic equations on the motion under gravity. Okay, so far as the motion under gravity is concerned, so there are three equations which are to be used as we have seen last time. तो जैसे हमने लास्ट टाइम जो देखा था उसका एक बार फटाफट रिवीजन करें मिनट में। देखो ठीक से सबसे पहले हमने ये देखा था कि जो थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन constructed for a body which is moving upwards. Okay, whenever the body is thrown in the upward direction, it is thrown speed, right? तो वो कुछ ना कुछ स्पीड से थ्रो किया जाता है and that speed is mostly positive and that's why we take it as u. Okay, if it is negative, don't forget to take it as negative. Okay, so according to the sign conventions we have सर आपका माइक ऑफ है। yes, sorry. Okay, so basically we have this first kinematic equation, then here it is second one, and this is the third kinematic equation. But remember that all these three kinematic equations are for the body which is moving in the upward direction. Okay, ऊपर की तरफ थ्रो किया हुआ जो बॉडी होता है उसके लिए ये सारे kinematic equations यूज होते हैं, ठीक है। उसके आगे हमने देखा था कि फॉर द डाउनवर्ड मोशन whenever a body is projected or released and it's moving in downward direction, so in general there are three equations and special there are three equations again. Okay, general and special. How can we distinguish them? See here, this is the general first kinematic equation in case when the body is released from the highest point. Okay, so this equation is used to find out the velocity of the body after time t. Okay, and this equation is used to find out the displacement covered by the body from the top. Okay, in the time t, and this equation ultimately is used to find out the relationship between velocity and displacement. तो मतलब velocity और displacement, तो इन दोनों के बीच में का जो रिलेशनशिप है तो वो इस इक्वेशन से हमको पता चल जाता है, जिससे हम अगर वेलोसिटी दिया है तो डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं और अगर डिस्प्लेसमेंट दिया है तो वेलोसिटी निकाल सकते हैं आराम से, नो डाउट। एंड नाउ दीज आर द थ्री इक्वेशंस व्हिच आर स्पेशल, एक्चुअली स्पेशल इन द सेंस, सी हियर, अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है फर्स्ट kinematic equation, it gives us an relationship between the full velocity, maximum velocity that is attained by the body at the lowest point, and the time which is required for the body to reach at the ground completely. तो पूरी तरह से ग्राउंड पे आने के लिए जो टाइम लगता है वो टाइम, और जो बॉडी वेलोसिटी अटेन करता है जस्ट अबाउट टू टच द ग्राउंड के इंस्टेंट पे, तो उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप हमको मिलता है।
Again here this is the height h, which is the full height traveled by the body. ये पूरे बॉडी का जो जिस पॉइंट से वो रिलीज किया उस पॉइंट का जो फुल हाइट रहेगा वो यहाँ पे h रहता है, और इस पॉइंट से नीचे पूरी तरह से नीचे गिरने के लिए जो उसको टाइम लगता है तो वो एक्चुअली कैपिटल T से डिनोट किया जाता है। और उनके बीच में जो रिलेशनशिप है ये हमको मिलता है h इज इक्वल टू हाफ ऑफ gt स्क्वायर, जिसको ही हम t इज इक्वल टू रूट ऑफ 2h अपॉन g ऐसा भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और एट द सेम टाइम velocity at the lowest point and height from which the body is released are connected by this equation v is equal to root of 2gh, which can also be written as h is equal to v square by 2g. Okay, so all these are the equations of motion applied for motion under gravity for any body which is moving under gravity. Okay, तो ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड हमने कुछ एग्जांपल भी देखे थे कल। if suppose a body is released from the top of the tower of some height, that height is given, and we have to find out the velocity of with which the body strikes the ground, and also we have to find out the time taken by the body to reach the ground. So velocity can be found out by this formula, and time can be found out by this formula. Just we have seen it now, and also we have seen another example in which a body is thrown up with a speed 49 meter per second, which is given here, and we have to find out its height attained and time to reach the highest point. And also afterwards we have found out the time taken by the body to reach the ground completely. तो वापस नीचे आने के लिए कितना टाइम लगता है तो वो डबल होता है, वो भी हमने उसमें देखा था। चलो ठीक है, now we will just see the next portion in this chapter, that is about बेसिकली ये इसका ही कंटिन्यूएशन है वो। सो और एक न्यूमेरिकल हमको करना है जिसके अंदर हमको ये देखना है कि हाउ द रिलेशंस बिटवीन हाइट, टाइम एंड velocity are connected together with each other. Okay, so consider a simple example. देखो a body, or just we'll type it here. A body suppose is thrown with a velocity of 49 meter per second upwards okay, find its velocity 2 seconds after its projection. Also find its height. At that instant. Okay, तो देखो ठीक से ये हमारा क्वेश्चन है, पढ़ने में आ रहा है सबको ठीक से? Or we can just increase the font size. Okay, I hope all of you can read the question carefully. See, a body is thrown vertically upwards with a velocity of 49 meter per second. Okay, find its velocity 2 seconds after its projection. So उसका प्रोजेक्शन होने के बाद 2 सेकेंड के बाद वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तो वो हमको ढूंढ के निकालना है। Which kinematic equation we can use here? First kinematic equation in general, which is we say V is actually equal to U minus GT. ओके, यही इक्वेशन हमने डिराइव किया था लास्ट टाइम, तो इसको अगर यूज करेंगे तो हमको मिलेगा V which is equal to U. U is 49, we know here 49, and that is going to be positive. No, don't forget.
so 49 minus g, which we know that it is 9.8 actually, into time t, which is given to be here 2 seconds. So we can just replace it by that. And if we simplify this further, then we can find out the velocity to be 49 minus 9.8 into 2, which is 19.6, right? So here it is 19.6. And if we just simplify this further, then we get it as how much it is? 29.4, correct? Hai? So 29.4 meter per second. This is actually going to be the velocity of the body after 2 seconds. Bilkul. Okay. So okay. Abhi, now we'll try to use the second kinematical equation so as to find its height. Okay. Height हमको निकालना है at that instant. तो उसके लिए देखो ठीक से. So we have that h is equal to ut plus minus half gt square. Okay. तो हाफ जी टी स्क्वायर. अब यहाँ पे अगर हम h निकालने के लिए u के बदले डाल देंगे उसका वैल्यू जो कि 49 है, और t के बदले हम डाल देंगे उसका वैल्यू जो कि 2 है, माइनस हाफ इंटू g का वैल्यू जो कि हमको पता है 9.8 होता है, और t स्क्वायर, t का वैल्यू हमको पता है ऑलरेडी, इट इज 2 अगेन. सो 2 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो वो 4 बन जाएगा. या तो फिर हम इसको कैंसिल कर सकते हैं डायरेक्ट. 2 कैंसिल हो गया, बाकी हमको बचा 49 into 2, which is 98, minus, yes, here it is 9.8 into 2, which is going to be 19.6, and once again, or here we are going to get this as, देखो ठीक से ये कितना मिल रहा है हमको, 98 minus 19.6 means how much it is, 78.4, correct है? Check. Yes, 78.4 meter. Okay, so this is actually going to be the height of the body after 2 seconds. Okay, चलो ठीक है. तो 2 सेकेंड के बाद वो बॉडी जो है वो इस हाइट पे रहेगा. ठीक है. अच्छा, अभी अगर इसी क्वेश्चन में अगर आपको थोड़ा अगर मॉडिफाई करके और एक क्वेश्चन अगर पूछा जाता, देखो ठीक से क्या पूछा हुआ है. Also find its velocity after 7 seconds. नहीं तो, right, sorry, after 8 seconds of its motion. Yes, 8 seconds. And not only velocity, but also the height. Okay, after 8 seconds from the projection. Yes, check. Can you do it? Just try to do it yourself. खुद से try करो. देखो ठीक से, velocity after 8 seconds of its projection. तो उसके लिए हमको फिर से फर्स्ट किनेमेटिक इक्वेशन यूज करना पड़ेगा. देखो, which is going to be v equal to u minus gt, right? Where v happens to be actually u. u मतलब कितना है यहाँ पे? देखो ठीक से 49 once again, and that is minus g मतलब 9.8, and that is to be multiplied with time t, which is 8 seconds here. Okay, so if we work it out, then what we are going to get here is 49 minus 9.8 into 8 कितना होता है? देखो ठीक से, 8 8 जा 64, we know that, and 6 carry, 9 8 जा 72 plus 6, which is 78, right? So we are going to get it as 78.4, and if we subtract 78.4 from 49,
what we are going to get is, yes, we are going to get it as minus of 29.4 meter per second. Correct है? Yes, minus of 29.4 meter per second, no doubt. And at the same time, if you want to find out the height of this body, height, h is equal to ut minus half gt square once again. So यहाँ पे h equal to u के बदले क्या आएगा 49, no doubt, and t is going to be 8 here minus half of g is going to be 9.8 and t is going to be 8 and 8 का square कितना होता है 64. So that we can cancel this 2 with 64, leaving behind 32, and we'll be left with h is equal to, yes, 49 into 8, how much it is? 8 nines are 72, 7 carry, 8 fours are 32 plus 7, which is 39. So it is going to be 392 minus, what is this? 9.8 into 32. Find it out. Or you can use the calculator. 313.6. Sure? Okay. So if we subtract this here, what we are going to get is, check. ये अगर subtract करेंगे तो कितना आएगा? 392 में से 313.6 subtract करो, वो हमको मिल रहा है 78.4 मीटर. अरे सिर्फ सब्ट्रैक्शन करना है हमको, अलग अलग आंसर्स कैसे आ रहे हैं? देखो यहाँ पे ये हमारा 9.8 राइट, मल्टीप्लाई बाय 32, ओके, 313.6, it is correct, and we have to subtract 392 minus 313.6. That's it. So it's going to be 78.4. करेक्ट है ना? ठीक है. अब देखो 78.4 meter. But just see the strange thing here that the answer we have got here and the answer we have got here is perfectly same. How is it possible? Who can explain? Why they are same? मतलब 2 सेकंड के बाद और 8 सेकंड के बाद पार्टिकल एक ही हाइट पे होगा, मतलब ऊपर गया या नहीं गया? Yes, very good, Parth. So basically this is the height of the particle while going up and this is the height of the particle while coming down. Okay, so answer in this first case here is when the particle is moving upwards, and here is the answer when the particle is moving downwards. And that's why see here, यहाँ से भी हमको पता चल रहा है velocities compare करो इस particle के, देखो ठीक से velocity अगर कंपेयर करते हो ठीक से तो यहाँ पे हमको वेलोसिटी जो मिल रहा है वो 29.4 मिल रहा है और वो भी पॉजिटिव है, दिख रहा है? ये देखो ये पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब पॉजिटिव ही है, राइट? और एट द सेम टाइम हियर इफ वी सी केयरफुली देन हियर इज अ नेगेटिव साइन, करेक्ट है? तो ये नेगेटिव साइन से क्या पता चल रहा है? द पार्टिकल इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विद द सेम स्पीड. सो दिस इज द सिमेट्री इन दिस केस. तो यहाँ पे होता क्या है ना कि सिमेट्री की वजह से क्या होता है कि पार्टिकल अटेन्स द सेम स्पीड एट दिस इंस्टेंट व्हेन इट इज गोइंग अप एंड गोइंग डाउन. तो मान लो कि ये पार्टिकल जो है, तो ये पार्टिकल है, ठीक है, सपोज दिस इज द पार्टिकल. ओके, अभी अगर इसको हमने
ये ग्राउंड है सपोज, तो ग्राउंड से उसको हमने प्रोजेक्ट किया, यस, सपोज दिस इज द ग्राउंड, ओके। अभी अगर इसको हमने ऊपर तरफ प्रोजेक्ट किया तो उसका जो मोशन होगा वो इस तरह से होगा, इट विल मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन फर्स्ट इन दिस वे, it will rise up to the maximum height and then it will come back, right, and hit the ground at the same point here. तो अभी जब जाने का जो उसका पाथ है, तो वो देखो केयरफुली, यहाँ से वो रिटर्न किया, राइट। तो जाने का पाथ जो है वो अगर 2 सेकंड के बाद हमने उसका वेलोसिटी फाइंड करने के लिए ट्राई किया और 8 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए ट्राई किया, तो 2 सेकंड के बाद क्या होगा, वो ऊपर की तरफ जा रहा होगा, जबकि 8 सेकंड के बाद हमको पता चल रहा है कि वो नीचे की तरफ आ रहा होगा। इसलिए यहाँ पे 8 सेकंड के बाद का उसका वेलोसिटी हमको नेगेटिव मिल रहा है। ये देखो, ये 8 सेकंड के बाद का उसका वेलोसिटी है और देन 2 सेकंड के बाद का उसका वेलोसिटी ये है जो कि पॉजिटिव मिल रहा है। और जाने के टाइम मतलब 2 सेकंड के बाद उसका जो हाइट है यहाँ से वो इतना रहेगा जरूर, और ये रहेगा, राइट। और अभी आने के टाइम जब वो इसी पॉइंट से गुजरेगा तो उसका जो हाइट है ग्राउंड से वो भी उतना ही रहेगा फिर से एक बार, और इसलिए हमको ये हाइट दोनों सेम हमको मिल रहे हैं। चलो ठीक है, ओके। अभी ये बात यूज करके क्या तुम बता सकते हो कि ये पार्टिकल जो है वो मैक्सिमम कितने हाइट पे जाएगा और कौन से इंस्टेंट पे मैक्सिमम पॉइंट पे जाएगा? यस, कैन यू टेल मी where when this particle will be at its highest point of the motion? Yes, anybody? How will you find at what instant the particle will be at its highest position? Yes, उसके लिए हमको क्या करना होगा, देखो कि उसके लिए हमको v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, यही इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, नो डाउट। तो बट यहाँ पे व्हेन द पार्टिकल विल बी एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी विल बी जीरो, करेक्ट है। तो व्हेन v विल बी इक्वल टू जीरो, तो उस समय वो और वी कैन से व्हेन द पार्टिकल इज एट हाईएस्ट पॉइंट, और जस्ट विल से बॉडी इज एट highest point at that time, its velocity v will actually be equal to zero, correct hai? So if you put this velocity v to be zero here, then we can get this v equal to zero, and that is equal to u is going to be 49, which is already there, minus g is going to be 9.8 as it is, and that is to be multiplied with time. This time is going to be found out, so usko hum bolenge ta, chalega? टी ए मतलब जस्ट वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम ऑफ एसेंट भी बोलते हैं उसको, ओके। टाइम ऑफ एसेंट मतलब जाने के लिए जो टाइम उसको लगता है, ऊपर पहुंचने के लिए, यहाँ तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम बोलेंगे टाइम ऑफ एसेंट, ओके। सो हाउ कैन यू फाइंड इट आउट? So you just take this 9.8 into TA here in this side, so that we get this 9.8 into TA, which is going to be equal to 49. And then we can be able to find out this TA, which is going to be 49 upon 9.8. How much it is? It comes out to be 5 seconds, correct? Okay, so here this 5 seconds is the time after which this particle is going to be at highest point. तो देखो 2 सेकंड के बाद वो यहाँ पे है, 8 सेकंड के बाद यहाँ पे है, तो जरूर 5 सेकंड के बाद जो है वो हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, मेक सेंस, राइट? Okay, and at the same time, if we want to find out the maximum height of this particle, how can we get that? Maximum height मतलब कितना हाइट पे वो जाके वापस आता है, इस पॉइंट का मैक्सिमम हाइट कितना है बिल्कुल बॉटम पॉइंट से, तो वो हमको निकालना है। हाउ विल यू गेट दैट? यस, उसके लिए हमको यहाँ पे सेकेंड कैरेमेटिकल इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। ये जो सेकेंड कैरेमेटिक इक्वेशन है उसके अंदर जिधर भी हमको टी दिख रहा है कि नहीं, इधर ये टी, तो इस टी के बदले हमको ये टाइम 5 डालना पड़ेगा ताकि हमको उसका मैक्सिमम हाइट मिल जाए, ओके। तो देखो ठीक से, सो h इज इक्वल टू, वी हैव दैट h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ g into t square, but here when the when t will actually be equal to 5 seconds,
मतलब टी ए के बराबर जब वो रहेगा ना ये टाइम, मतलब ये 5 सेकेंड्स उसको हम बोल सकते हैं. When t will be equal to 5, then h will be equal to capital H. That is the maximum height. Okay, the height will become maximum when time t equal to 5 seconds is put in this equation here. So let us try what happens. So h becomes equal to u, which is 49 into 5. Okay, ये 5 बन गया, minus half of g, which is 9.8, and that is multiplied with time square. T is going to be again 5, right? So it's 5 ka square. Yes, if we solve this further, then we can get it as 49 into 5, which is 245. Yes, 245 minus, what is this? अच्छा, 2 को cancel out करो 9.8 के साथ, leaving behind 4.9 here. So we can get this 4.9 into 25. Okay, so if we find it out, then h can be found out to be equal to, how much is this? 245 minus 4.9 into 25. How much it is? Yes, 4.9 multiplied by 25, right? It's going to be 122.5. And we have to subtract it from 245 also, right? So 245 minus 122.5. How much it comes out to be? Again 122.5. See it here. So we can say 122.5 is kept here, and the subtraction comes out to be 122.5 once again. Okay, meter. Yes, this is going to be the maximum height. Okay, sorry, we have to write it as capital H actually. So this is the capital H we have found out here. Okay, so we have got this maximum height. Okay, can you tell me any another alternative method to find out the same maximum height? Just think about. Can you find this maximum height by any alternative method? अभी इसमें तो हमको ये TA निकालना पड़ा ना. अगर TA नहीं दिया है, TA अगर हमको नहीं पता है, then how will you find out the maximum height of the particle? Just check. Yes, very good. Path. The third parametric equation has to be used here. Okay, that is v square upon 2g. हमने रेडीमेड भी इक्वेशन डिराइव किया है. देखो ठीक से यहाँ पे अभी ये मैं बताता हूँ आपको कि v स्क्वायर एक्चुअली इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2g, ऐसा है. और हमको पता है ऑलरेडी, सॉरी 2g s, ये इक्वेशन हमारे पास है, ठीक है. बट वी नो दैट s becomes equal to capital H when v becomes equal to 0, because when the particle reaches at the highest point, see here, यहाँ पे हमने देखा अभी कि when the particle reaches at the highest point, मतलब ये पार्टिकल जब धीरे धीरे ऊपर ऊपर जाते जाते मैक्सिमम पॉइंट पे जब जाता है, हाईएस्ट पॉइंट पे जाता है, तो वहां पे रुकता है ना. रुकने का मतलब क्या है? रुकने का मतलब ये है कि उसका वेलोसिटी वहां पे 0 बनता है, और वेलोसिटी 0 बनने के बाद फिर वो रिटर्न करता है, एंड रिटर्न जर्नी स्टार्ट करता है, एंड देन इट रिटर्न्स and its velocity goes on increasing in the negative side, in the downward direction, and that's why we can characterize this point as velocity 0 point. Okay, so we can say that the particle reaches at the highest point when its velocity becomes 0. And now if we use it here, then we can be able to say that s is equal to h when v equal to 0. So if you put it here, then we get this as 0 square is equal to u square minus 2g into s के बदले क्या रखना है हमको? h रखना है, करेक्ट है, which gives 2gh is equal to u square, right? And hence we can get that h is equal to u square upon 2g. No doubt. अब यहाँ पे सिर्फ कल वाला जो एक्सप्रेशन है उसके अंदर हमने u के बदले v यूज किया था. इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. सो u के बदले अगर हमने डाल दिया 49, जो कि हमको दिया हुआ है ऑलरेडी,
और उसका स्क्वायर करना है और उसको डिवाइड किया 2 टाइम्स ऑफ 9.8 से, तो हमको देखो क्या मिलेगा, तो हमको मिलेगा 49 का स्क्वायर, हाउ मच इट इज, चलो लेट अस write it as 49 into 49, okay, no problem, and here 2 into 9.8, this 9.8 can be written as 2 into 4.9 actually, because 4.9 का डबल ही तो होता है ना 9.8, and now if we just divide cancel out this 4.9 and this 49, which is the 10th multiple of 4.9, then we can be able to say that this will be actually 490 divided by 4, correct है, 2 2s are 4, okay, so if we just divide this also, then we can get 4 2 2s are and 2 2s are 2 8s are and 2 5s are, right, if we just divide this also, then we can be able to say this will be 1.1 ones are 2 ones are 2 and 2 fours are, and aren't we making any mistake, sorry, we have made a mistake, yes, when we divide it by 2, so 2 2s are 2 4s are and then 2 5s are, right, and if we divide by the 245 by 2, already we have done it here, so we are going to get it as 122.5 meter, which is the same as we have done it here in the other method, तो दूसरे मेथड से जो हमको आंसर मिला था वो यही था बिल्कुल, तो इससे हमको पता चलता है कि हाउ द kinematic equations are flexible, we can use them as we want, but it should be correct, that is the only condition, yes, okay, now okay, can you tell me when the particle will hit the ground, yes, tell it in the chat box, when the particle will come back to the ground once again after the time of projection, after what time the particle will hit the ground, yes, very good, 10 seconds, why, because see here the particle requires 5 seconds to go from the lowest point to highest point, right, यहाँ पे ऊपर जाने के लिए उसको 5 सेकंड लगते हैं, तो सीधी बात है कि ऊपर से वापस नीचे आने के लिए कितना लगेंगे, वापस 5 सेकंड लगेंगे, तो इसका मतलब जरूर वो पार्टिकल जो है वो 10 सेकंड के बाद वापस नीचे आएगा, करेक्ट है, बट हाउ कैन वी फाइंड इट आउट फ्रॉम इक्वेशंस, see here we can make use of this first kinematic equation here, yes, first kinematic equation can be used here, how can, see here, तो हम ये फर्स्ट kinematic equation यूज कर सकते हैं यहाँ पे, देखो कैसे, because we know that this V is equal to U minus GT, this is the first kinematic equation, okay, and also we have seen that when the particle is projected up with some speed 49 meter per second, okay, it goes up in the highest point and again comes back to the lowest point, and whenever it comes back to the lowest point here, it attains the same amount of velocity but only negative, check, so if the velocity of projection of the body is 49 meter per second, then what will be the velocity of the body whenever it will strike the ground, sorry, velocity U is going to be positive plus 49, but the V will actually be equal to minus of 49 here, why, because when the particle will just about to hit the ground, it will attain the same amount of velocity as it was projected with, but only in the downward direction, velocity है उसका upward direction में था, ये वेलोसिटी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, उसी के कारण हम यहाँ पे v के बदले अगर -49 डाल देंगे और u के बदले तो ऑलरेडी 49 हमको पता ही है, तो ये सब वैल्यूज अगर हमने यूज किया यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर, तो हमको मिलेगा टाइम का वैल्यू जो कि 10 सेकेंड्स आएगा करके देखो यहाँ पे, it is -49 which is going to be u which is 49 and minus g which is 9.8 and that is multiplied by time,
कैपिटल टी उसको हम बोल देंगे, चलेगा? कैपिटल टी, which is the time required by the body to come at the ground once again. Okay, so we can say that this minus 49 can be transferred that side and 9.8 t can be transferred in this side. So as to get this as 9.8 into t, which is equal to 49 plus 49. So that we can get this as, yes, 9.8 into t is going to be actually equal to 98. So that we get this capital T is equal to 98 divided by 9.8, which happens to be simply 10 seconds. Correct है? Okay, no doubt. तो इस तरह से हमने ये निकाल लिया. Yes. Okay, do one more question now as the next one. Okay, see here, the question is that a ball is thrown upwards with the velocity of 50 meter per second from the top of a tower (30-meter high). Okay, I will repeat again. A ball is thrown upwards with the velocity of 50 meter per second from the top of a tower which is 30 meter high. Okay, तो एक टावर के बिल्कुल टॉप पॉइंट से हमने उस बॉल को थ्रो किया 50 मीटर पर सेकेंड स्पीड से, और वो भी 30 मीटर हाई टावर के टॉप पॉइंट से. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है, देखो ठीक से. फाइंड time taken by it to reach the highest point ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है. ठीक है, द सेकेंड क्वेश्चन is also there. The time taken to reach the ground. अभी देखो, ग्राउंड मतलब टावर के लेवल पे नहीं, ग्राउंड पे मतलब नीचे जाने के लिए कितना टाइम लगेगा ये हमको निकालना है. और एक क्वेश्चन यहाँ पे है, फाइंड इट्स वेलोसिटी व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड. यस, एंड दिया हुआ है टेक g एज 10 मीटर पर सेकेंड. ओके, तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा हमारे लिए. g is given to be 10 meter per second square. Okay, this is the question. Let's try to solve it. How we can do that? See here, a ball is thrown upwards with a 50 meter per second from the top of a tower which is 30 meter high. What does it mean? That means there is a tower Yes, suppose this is the tower.
ओके, एंड सपोज द बॉल इज थ्रोन एट दिस पॉइंट हियर, तो यहाँ से उस बॉल को हमने थ्रो किया ऊपर के डायरेक्शन में। Suppose this is the ball, it is thrown upwards with the speed ओके, जो कि दिया हुआ है ऑलरेडी 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से उसको हमने थ्रो किया ऊपर की तरफ। चलो ठीक है, अभी ये बॉल जो है वो ऊपर जाएगा पहले और उसके बाद फिर वापस नीचे आएगा ड्यू टू द ग्रेविटी, बराबर। हमको निकालना क्या है अभी, देखो टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच एट द हाईएस्ट पॉइंट। हाउ वी कैन फाइंड आउट? हाईएस्ट पॉइंट पे जब वो जाएगा तो क्या होगा, तो हाईएस्ट पॉइंट पे यहाँ पे रिटर्न करने से पहले यहाँ पे रुकेगा कि नहीं, जरूर। तो रुकने का मतलब क्या है, v becomes 0। सो टाइम निकालने के लिए हम फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करेंगे फिर से एक बार, राइट। सो v is going to be equal to u minus gt, correct है। so if we use it here and we are using the fact that when the particle is at highest point, okay, the body is at highest point, what happens is when t becomes equal to capital T and at the same time the height h will be the highest point, मतलब h जो है वो मैक्सिमम रहेगा, उसका हाइट कैपिटल h के बराबर रहेगा। और सॉरी, लेकिन हमको ये पता है, ये हमको चाहिए ही नहीं। व्हेन स्मॉल t will be equal to capital T, v will be equal to 0, ये हमको यूज करना है। so just put v equal to 0 here and get it as v is equal to 0, 0 equal to 50 minus g, which is given to be 10 into capital T, so that we get this 10t is equal to 50। what does it mean? t is actually equal to 5 सेकेंड्स, ओके। तो हमको फिर से एक बार ये जो टाइम है ऊपर जाने का वो 5 सेकेंड मिल गया। चलो ठीक है, नाउ जस्ट टॉक अबाउट द सेकेंड क्वेश्चन हियर। टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच द ग्राउंड, एक्चुअली हाउ विल यू गेट दैट? तो अभी ग्राउंड पे कितने टाइम के बाद वो पहुंचेगा वो हमको क्या पता, क्योंकि अभी देखो ये नीचे जाएगा, इस लेवल पे जब आएगा वो टाइम तो हम निकाल सकते हैं 10 सेकेंड्स, नो डाउट। बट अभी यहाँ से भी नीचे जाने वाला है वो, और यहाँ पे ग्राउंड है, देखो दिस इज द ग्राउंड एक्चुअली। तो यहाँ पे जाने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, हाउ कैन यू फाइंड आउट? सो उसके लिए हमको सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन यूज होगा। देखो ठीक से, सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन कैन हेल्प अस लॉट हियर इन दिस केस। सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व इट हियर बाय यूजिंग द सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन। व्हाट डज इट टेल्स अस? देखो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, करेक्ट है। लेट अस पुट इट हियर, h is equal to ut minus half gt square, yes। now अब यहाँ पे ये बॉडी जो है वो जब इस पॉइंट पे होगा तो उस समय उसका h कितना होगा, बता सकते हो? यहाँ से देखो h जो है वो हम ऊपर जाने से पॉजिटिव मेजर करते हैं, लेकिन नीचे जाने से h हमको नेगेटिव मेजर करना पड़ेगा। कैन यू टेल मी व्हाट दिस डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू? वो तो ऑलरेडी दिया हुआ है 30 मीटर, है कि नहीं। तो अब यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये -30 मीटर के बराबर बनेगा। देखो ठीक से, -30 मीटर, दैट मीन्स वी हैव टू अप्लाई हियर h is equal to -30 here। put h is equal to -30 in this equation and whatever the value of time we get here will be the time taken by the body to reach at this point here। समझेगा ठीक से? सो यहाँ पे आने के लिए जो टाइम लगता है वो टाइम निकालने के लिए हमको इस इक्वेशन के अंदर h के बदले -30 डालना पड़ेगा, बिल्कुल। सो इफ यू पुट इट हियर देन वी कैन गेट इट एज, यस, h के बदले -30 डाल दो तो ये बन गया -30, जो कि u मतलब कितना है 50 है, 50 इंटू t, t तो हमको निकालना है नो डाउट, माइनस हाफ ऑफ g कितना है 10 उन्होंने देखे रखा है, into t square, again this t is not known, so we can just solve this further। okay, ये 2 को just cancel कर दो, so we are left with 5 here। okay, so we can get this as -30 is equal to 50t minus 5t square, correct है। and now if we bring all those terms in this side then we can get it as 5t square
minus 50t and minus 30, right? Which is going to be equal to 0. So if we divide this whole throughout by 5, then we are going to get it as t square minus 10t minus 6, which is equal to 0. Okay, so this becomes the quadratic equation actually, and this has to be solved so as to get that required time. बट अभी यहाँ पे हमको पता है कि 6 के जो है 6 को कोई से भी फैक्टर्स अगर यूज करो तो भी उसका सम 10 तो नहीं बनेगा. Okay, what is there in the third question here? Its velocity when it strikes ground. Okay, so how can get it that using the third kinematic equation here. So v square is equal to u square plus or minus 2gh. चलो ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम यूज करेंगे तो देखो v कितना होगा जब यहाँ पे नीचे आएगा वो तो हमको पता नहीं है ऑलरेडी, राइट? So there is no use of this third kinematic equation here. नहीं, velocity तो निकालना है ना हमको. Yes, तो velocity can be found out because we know this height h here. Height तो हमको पता है ना यहाँ पे -30 करके. Yes, so put h is equal to -30 and obviously g is equal to -10. या यहाँ पे ही माइनस साइन ले लो तो भी चल जाएगा, ठीक है? तो v square is actually going to be equal to u square. u मतलब कितना यहाँ पे 50 और उसका स्क्वायर माइनस अच्छा प्लस 2 इंटू जी के बदले आएगा -10 और h के बदले आएगा -30. करेक्ट है? जिसको लेके हमको ये मिलेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 50 स्क्वायर मतलब 2500. करेक्ट? प्लस what is this 600, right? So it is going to be 600, and if we add these two up we get it as 3100. Yes, and then we'll be able to find out the velocity, which is going to be actually root of 3100, which can be found out by using the calculator or just log tables. And what about this? We can find out the value of time by using the quadratic equation theory. याद है ये फॉर्मूला जो हमारे पास होता है माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. याद है? तो ये वाला फॉर्मूला हमको यूज करके इसका जो टाइम का जो वैल्यू है तो वो हमको निकालना होगा. यू कैन फाइंड आउट इजीली. अभी चलो ठीक है, यहाँ पे हम ये कर भी सकते हैं. तो माइनस बी कितना है यहाँ पे -10 मतलब +10 हो गया वो, राइट? प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर. तो बी कितना है यहाँ पे -10 अगेन, तो -10 का स्क्वायर बन गया 100, राइट? सो दिस इज 100 minus of minus plus 4 into a which is 1 into c which is 6. Yes, and that is divided by 2 as it is here, so that we get is 10 plus or minus root of what is this 124, correct? And that is to be divided by 2. That is going to be the time. Obviously minus sign will not make sense. यहाँ पे माइनस साइन से क्या होगा, नेगेटिव आंसर हमको मिलेगा, ठीक है? तो दैट विल बी रिजेक्टेड, ओनली द पॉजिटिव वैल्यू विल बी एक्सेप्टेड, एंड यू कैन गेट इट द टाइम एज 10 प्लस रूट 124 which can be written as 124 को कैसे लिख सकते हैं 4 into 31, so it will be 2 root 31, that is to be divided by 2, which can also be written as 5 plus root 31. And root 31 can be found out by using some log calculations or using log table or calculator.
So this will be the time required by the body to reach the ground. Okay, तो ये हम इस तरह से निकाल सकते हैं आराम से. तो बेसिकली कंसेप्ट ये है कि हमको नीचे जाने से ये बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव लेना पड़ता है. ये इसके अंदर हमको ज्यादा समझने की बात है, तो वो हमारा इंपॉर्टेंट बात है. तो याद रखिए से. सो दिस इज ऑल अबाउट द सम प्रॉब्लम्स which are based on the kinematic equations which are in the gravity. Okay, तो ग्रेविटी में जो काइनेमेटिक इक्वेशंस होते हैं तो वो हमने किस तरह से यूज करने का वो आज के लेक्चर में देखा. सो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका आगे का जो पार्ट है वो स्टार्ट करेंगे विच इज कंसर्न विद प्रोजेक्टाइल मोशन. ओके, प्रोजेक्टाइल मोशन. सो अभी यहाँ पे हम ये लेक्चर एंड करते हैं. थैंक यू ऑल ऑफ यू.